Very good morning to all of you. So today we will revise the second unit, that is the clarify the message. So in this unit we will study three methods of the clarification of a message or anything else in communication. So in the these three methods are repetition, second is the phrasing, paraphrasing or rephrasing, and third is the question techniques. So the third method, question techniques, should be studied deeply. That is very important from the point of view of the examination. So we will start from the first topic, the repetition. What is the meaning of the repetition? You know very well that repetition means to reiterate something again. For example, you can understand this very well. In nursery class, the students reiterate the rhymes again and again. So this is the repetition. So now question arises, why should here in our discussion, what is the significance of the repetition? So sometimes we want to seek some more knowledge, and sometimes we want to clarify the message. So there is a need to repeat some key phrases. So this is the repetition. So I hope that you will understand the repetition. It is very simple. I will try to make you understand with the other example. Suppose if you are talking with your friend, at one point, suppose if there is a noise or due to the other reason, if you are unable to understand the statement, then you often say to your friend that what are you saying? It means you want to repeat something. So in order to understand. So this is the meaning of the repetition. So I am giving you another example that will clarify it more better. So suppose there are two persons, A and B. If person A says that he whispered in my ear, he whispered, or in other words, he whispered to me. Person B says he whispered to you. Now, first person means A. Yes, he said I was very nice. So in this conversation, here we observe that the second person means B. B is seeking much more information from the A person. That is why he used the technique of repetition. He repeat his words. He whispers to your ear. So this is the repetition technique. In repetition technique, we repeat the key phrases or to obtain the more information. So this is the repetition technique. Now second method is rephrase or paraphrase. So first of all, what is the meaning of the rephrase? Rephrase means to say a thing in your own word again. And paraphrase means to clarify or to describe or to explain in your own word. For example, suppose जब हम एक ही बात को अपने ढंग से अपने शब्दों में किसी दूसरे को समझाने के लिए बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रेज. कभी कभी कुछ चीज़ें छोटे बच्चों को, मान लिया हम कुछ छोटे बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, कुछ इंग्लिश की ट्रांसलेशन है या कुछ संस्कृत की ट्रांसलेशन है, उसको अपने वर्ड्स में करके सिंपल बना के कई बार जब हम दूसरे को समझाते हैं तो उसको बोलते हैं रिफ्रेज. और
पैराफ्रेज का मतलब कोई कीवर्ड है या कोई एक कोई कोड वर्ड टाइप जो चीज़ है, उसको हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा व्याख्या करके अगर जो हम बताएं in order to make the other person to understand the things. For example, our scriptures are written in a poetic style or in Sanskrit. For example, if I take the religion, the Hindu religion, in Hindu religion the scriptures are written in Sanskrit language. So those Sanskrit slokas or mantras need to be translated or to be paraphrasing. I hope that you would understand the thing. दोबारा से एग्जांपल मैं एक बार और बताऊं. रिफ्रेज और पैराफ्रेज का क्या मतलब है. रिफ्रेज मीन्स किसी एक चीज को सिंपल वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में समझाना, वो होता है रिफ्रेज. दूसरा होता है पैराफ्रेज. पैराफ्रेज का मतलब उसके कुछ और उसमें थोड़ा सा एडिशन करना या कुछ वैसा ही बोल देना अपने शब्दों में, कुछ आसान करके या कुछ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो उसको हम पैराफ्रेज बोलते हैं. जैसे पोइट्री में हम सप्रसंग व्याख्या कीजिए, आपने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा. इंग्लिश में तो हायर क्लासेस में किया जाता है ये पैराफ्रेजिंग. तो सप्रसंग व्याख्या कीजिए किसी श्लोक की, कोई मान लिया कबीरदास जी का कोई दोहा है या कुछ है, तो उसको हम बोलते हैं पैराफ्रेज. अब यहाँ इन दिस कंटेक्स्ट, इन दिस यूनिट, इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द मैसेज और इन ऑर्डर टू गेट द मीनिंग क्लियर, वी यूज दिस टेक्निक, पैराफ्रेज टेक्निक. और थोड़ा सा डिटेल में अगर जो मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान एक पैराफ्रेजिंग का एक एग्जांपल और देता हूं दूसरी लैंग्वेज में. मान लिया जैसे एक वाक्य मैं बोलूं, ईशावास्यम इदम, ईशावास्यम इदम तेन त्यक्तेन भुंजिता. अब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा. अब इसको अगर जो मैं ये कह के समझाऊं अपने शब्दों में कि ईशावास्यम इदम, अब ये जो हम चारों तरफ देखते हैं ये सब, इस सब में भगवान का वास है, परमात्मा का, अल्लाह का जो भी है ऊपर सुप्रीम पावर, उसका वास है. तो ये मैंने क्या किया, इसको पैराफ्रेज कर दिया. तो ये एक पैराफ्रेज का एग्जाम्पल है. इन इंग्लिश द एग्जाम्पल इज गिवन इन योर नोट्स. आई होप दैट ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. दूसरा, तेन तक तेन भुंजी था कि इन भगवान के दिए हुए ही सारे पदार्थ हैं, इन दिए गए पदार्थों का उपयोग या उपभोग करो. सो सच टाइप ऑफ द थिंग्स विच नीड्स सम एक्सप्लेनेशन, सो दैट इज द पैराफ्रेजिंग. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ये बहुत दोनों आसान थे, रिपीटिशन और रिफ्रेज और पैराफ्रेजिंग, ये दोनों आसान थे. मैंने एग्जाम्पल दिए, संस्कृत के एग्जाम्पल दिए, पढ़ हम इंग्लिश में रहे हैं. तो इंग्लिश में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें फ्रेजिंग और रिफ्रेजिंग के. अपने नोट्स को एक बार देखिए, उनमें मिलेंगे. तो एक बार if the things are clear in the mind, then it will help you very much. इसलिए थोड़ा सा ये इस तरह का एग्जाम्पल दिया. now we will study, अब ये now the important portion of this unit है कि there are 3 types of the question technique. One is closed questions, second is open questions, and third is probing questions. So in different situations we use different type of technique. For example, closed questions. If we take the example of the closed question, there are situations in which we should use closed question technique. As you know that the closed
The word close, close means to close something. It means short. So these can be answered with a single word. These questions may be answered with a single phrase or single word, or you can say that in yes or no. Then this type is known as closed question. Example: how old are you? You will say that I am 16 years old, 18 years old, 20 years old. So this is very small phrase. And if I ask you, how are you? If you say I am well, if you say well, someone say fine. So this are you feeling sad? Are you okay? You will say that yes. Another person may also say no. So these the questions which have small answers in yes or no, or in a word or in a phrase, then we can say that these are the closed questions. Now, in what situations or in which situations we will use closed questions? So, number one situation, most important situation is to close a discussion. To close a discussion. For example, if you are introducing your product, or you are taking, if you are discussing something in a group to make them clear about your product, and you have uttered about the qualities and about the advantages and the superior aspects of your product, and at the end, if you want to close your discussion in order to persuade them, so at that time at that time you will ask the question, okay then guys, so now I expect that you will give the order. Do you agree? Mr. Mohan, are you agree? Will you sign the order? So, or should I think that I should deliver the product to you? So, from the other side, the answer will be either yes or no. So, such type of questions, or in such type of situations, we use the closed question technique. One. Second, to open a conversation. To open a conversation. For example, you are in the trade fair and you want to talk someone. So, how will you start? Naturally, you will start with small questions. For example, hi, the weather is very good. Is not it? Simply, other person will give the response. Therefore, we can say that in order to receive the response of the other person, or to start a conversation, we use this technique of the closed questions. Third, to setting up the desired either positive or negative frame in the mind of the listener. अब देखिए, now look, 3 sentences. Are you getting the products in time? One question. Second, is the quality is good? Third question, are you satisfied with such type of arrangement? Now fourth question, would you like to choose a new product much superior? अब देखिए,
first three sentences and the fourth sentence. In the fourth sentence, you are going to set up a positive, your desired positive framework in the mind. Your desired, you already set up your goal. So now you have prepared the customer or the other person in order to say, to accept something. To accept something. So such type of the close questions, close question technique may be applied there. And so you can say that in the close question, we start the conversation with the help of the close question, or the closure to pursue, to closure in a persuasive discussion, or for achieving closure of a persuasion, you can say that. This is all about this close question. Now, open questions. Open questions means which starts from what, why, when, where, or to describe. It means we want to receive a long answer. We want to receive something more, or a long answer, some explanation. So at that time we use the open question. For example, what will you do during the holidays? आप क्या करेंगे छुट्टियों में? Now what is this? This is we want to know something more about the from the listener. So this is the open question. So you can say that to find out the more about a person or their want, their THEIR, their wants, needs, and problems, we use this probing question to get people realize their extent of problem, realize the extent of their problems. For example, I fear or I wonder what will happen if the customer will complain more. So it means कहीं आपका कहीं हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, कस्टमर वहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हम एक करेक्टिव मेथड के लिए जो हमारे जो हम ये चाहते हैं कि दूसरे पर्सन जो इससे रिलेटेड कंसर्न पर्सन है उसको रियलाइज कराना चाहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम जो है किस एक्सटेंट तक है. So in such type of situations we use this. Further, to show concern to the other person. If you want to, कई बार क्या होता है कि हम दूसरे पर्सन को अपना वो दिखाने के लिए कि हम कितने केयरिंग है, अपना उसका कंसर्न करने, अपना मतलब टू शो द कंसर्न. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड. तो हम पूछ लेते हैं कि यू आर लुकिंग अपसेट, व्हाट इज गोइंग, और यू आर लुकिंग सो हैप्पी, व्हाट इज देयर, व्हाट हैपन्स. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हम करते हैं, इससे वो बताएगा, ही और शी विल टेल मोर एंड मोर, और इससे कंसर्न भी हमारा दिखता है कि हमें उनकी फिक्र है. तो इस तरह हम इसका ओपन टेक्निक के क्वेश्चंस का यूज कर लेते हैं. और जैसे अब प्रोबिंग क्वेश्चन, प्रोबिंग मीन्स टू सर्च आउट. And remember, this question will start from the WH family. WH family means what, why, where, whom, how, like that. It means we want more and more detail and we want to search something. Probe means to search out. किसी चीज़ को खोज लेना, जैसे पुलिस खोजती है ना क्वेश्चन पूछ के, उस तरह के क्वेश्चंस प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं. When we seek more detail. So situation, information, sometimes information is vague और इनसफिशियंट. इंफॉर्मेशन कई बार क्या होती है, वेग होती है, वेग मीन्स जो स्पष्ट ना हो, एम्बिग्यूअस हो जो, और इनसफिशियंट होती है. तो उसमें पर्पज, समटाइम्स पर्पज इज नॉट क्लियर. सो इन दैट सिचुएशन वी यूज. एंड थर्ड, वी टू चेक द रेलिवेंस टू द मेन टॉपिक वी यूज द प्रोबिंग क्वेश्चंस. फर्दर, टू नो द जजमेंट
जजमेंट एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन का क्या जजमेंट है और वो किस तरह से मूल्यांकन कर रहा है, इसको जानने के लिए हम इस तरह का यूज करते हैं इसको। और तीसरा, हाउ द अदर पर्सन इज फीलिंग, टू नो द इमोशनल स्टेट ऑफ द पर्सन वी यूज प्रोबिंग क्वेश्चंस। होप दैट दिस unit will be now clear to you, and yes, tomorrow I will give you some questions from this unit. Have a nice day, take care of you.